Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In continuation of my last video, the professional series that I'm working on, हम आज बात करेंगे wave animation के ऊपर, and this is what you guys are about to learn. Okay, now let's learn कि मैंने किस तरह से बनाया. Add a new slide. लास्ट टाइम मैंने जो है वो आप लोगों को गाइड्स के हवाले से बता दिया था कि ये गाइड्स यहाँ पर किस तरह से नज़र आ रहे हैं. Now, starting with, you're going to add one big box that is going to cover the whole slide. And I'm just going to color it, a yellow bright color. Now I'm just going to add one text box. And I'm going to write wave animation here. I am going to format it. और साइज मैं इसका बढ़ा के कर दूंगी 100. इसके बाद आप सिर्फ वेव को सिलेक्ट करेंगे, वर्ड को, और ये वाला जो फॉन्ट है, स्टाइल, वो आप इस्तेमाल करेंगे. इट हैज़ अ वेरी यूनिक नेम. इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. वेव का सिर्फ जो साइज़ है वो हम बढ़ा के कर देंगे अराउंड 280. अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको मिडल अलाइन कर लूँगी और यहाँ फॉर्मेट में जाके इसको अलाइन कर दूँगी टू द टॉप. तो ये मेरी ये जो गाइड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है उसमें यहाँ पर आ जाएगा. और इसके साथ साथ मैं इसको बोल्ड भी कर दूँगी. इसका कलर मैंने कर दिया वाइट. नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस टेक्स्ट बॉक्स एंड द बॉक्स दैट आई क्रिएटेड अर्लियर. आई एम गोइंग टू गो ऑन फॉर्मेट, मर्ज द शेप and combine it. अब ये इसका एक मार्क्स क्रिएट हो गया. Now comes the second part. Add another box. इसका कलर आप चेंज कर लीजिए with no outline. Now add a circle here. इसकी width कर दीजिए 1.1. Now press Ctrl plus D 10 times. So you could have 11 circles. Place one circle here, select all of them, align top, and then distribute horizontally. Now this is important. Select the box first, and then by holding the shift key, select the circles. Now go to merge shapes and subtract it. There you go. Now Ctrl C and Ctrl V. Place the other copy here and choose a lighter color. Now select both of these और इनको नीचे ले जाइए थोड़ा सा स्लाइड से बाहर. अब भी सीक्वेंस मैटर करता है. सिलेक्ट द बैक वन फर्स्ट, द डार्क विद डार्कर कलर, और फिर लाइटर को सिलेक्ट कीजिए. एनिमेशंस पे जाइए और यहाँ पर आप जाएंगे मोर मोशन पाथ्स पर, और यहाँ पर आपने ढूंढना है लाइन कर्व्स में. लेफ्ट साइड पर आपके पास आ रहा होगा डिकेइंग वेव. कीप योर कर्सर हियर एंड मूव इट टू 90 degrees. थोड़ा सा और कर लीजिए इसको ताकि ये वेव जो है ये ऊपर जा सके. नाउ इट्स परफेक्ट. अब आप इसको प्लेस कर लीजिए ओरिजिनल के ऊपर. मेक श्योर करें कि बॉटम जो है वो मैच कर रहे हों, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर कर ऊपर ले जाइए दोनों को कि ये आपके पूरे वर्ड को कवर कर रहे हों. और आप इसको थोड़ा सा विड्थ में भी बढ़ा सकते हैं ताकि वेव जो है वो इसकी स्मूथ हो जाए. Now go to animation pane. Your first one is on click and your second is with previous. सेकेंड वाले का जो डिले है वो बढ़ा के कर दीजिए 0.25 सेकेंड्स, और इन दोनों को सिलेक्ट करके इनकी ड्यूरेशन को कर दीजिए 6 सेकेंड्स. Now select both of them in any sequence and send them to back.
Now let's watch it. Here you go, guys. This is your line animation. Let's watch it again. And with these few simple steps, you have just learned to make your presentation cool, trendy, and unique. Don't forget to leave your feedback, your comments, and I will inshallah come back with more. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.